So very good morning students, all of you. I think in our previous chapter we will discuss about the factor affecting communication. Okay, so in this video we will discuss about the remaining factor affecting communication. So the remaining is what? The environment, visual perception, past experience, prejudice. So these four topics are remaining, and in previous class we will discuss about the language and feelings. Okay, so let us start with the environment. So what is environment? Environment is what? Environment is just a condition or a situation or a location where the communication will be held. Okay, so this is the environment. If you are taking meeting in a restaurant, so restaurant is just a environment fit for you. Okay, if you are communicating in a room, so room is an environment for you. Clear? So what is the effectiveness of communication and environment? So effectiveness of communication is affected by the environmental conditions also. The message may get blocked or misinterpreted due to the environmental factors like location or situation, okay, where it takes place. Clear? So like example, if you're meeting in a restaurant, so if you're meeting in a restaurant, then lots of noise was there, okay, very loud music or a large crowd, yes, so it can cause some distraction. Okay, so it can cause some distraction or discomfort. Ultimately it affected our communication. Then second is what? If you are conducting meeting in the same place, अगर आप same place पर meeting बार बार कंडक्ट करेंगे तो एक बोर फीलिंग होती है, जो फीलिंग आती है, बोरिंग की फीलिंग आती है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? There are some solutions. So what are the solutions for environmental? We will discuss about some solutions. So first solution is what? You must communicate in an environment that is spacious and more comfortable. Okay, जो आपका अगर रूम है तो रूम भी स्पेशियस रूम होना चाहिए और कंफर्टेबल बैठने की ये सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए. द नेक्स्ट इज व्हाट? द मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड इन अ रूम विच हैविंग नॉट टू कोल्ड एंड नाइदर टू बी warm. So why it is if it is too cold, then it just makes employee unhappy or discomfort. Okay, and if it is too warm, then a laziness will occur. Okay, so the room is not too cold and neither too warm. The next, check the room carefully. Nothing is near or behind. Nothing is near or behind that causes distraction. Okay, so it's just a simple line. The next is what? The visual perception. So visual perception. So first is what is the meaning of visual? Visual means what you see, and the perception means what you understand. Okay, what you see and what you understand is just a visual perception. Next, the visuals like, are you remember your first day of the school? It is a visual. Are you remember the first bicycle ride? Are you remember? Are you remember the first classmate of your class? So these are the visuals. And what the things is done at that particular time, this is a perception. Like आपको फर्स्ट स्कूल का फर्स्ट डे याद आता है तो सब प्रोसेसिंग होती है दिमाग में, तो याद आ रहा है मतलब प्रोसेस हो रही है, तो वो क्या है? परसेप्शन हो गया. ठीक, आप उससे क्या समझ रहे हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपने जो देखा है उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द विजुअल परसेप्शन. सो लेट्स टेक वन एग्जांपल. सो सिंपल एग्जांपल इज व्हाट? यस, हियर इन दिस पिक्चर you will see the two men are there, one is left one and the right one. So the left person see the number 6, but the right person the same number will show as the 9. So this is the visual perception, what I say and what I interpret. Okay, the next, I think one more example are there.
Yes. So this is what? A glass of water. So if you notify the glass from the upper portion, the glass is half empty. Okay. And if you focus on the lower part of the glass, then it is what we say, it is half full. So this is the visual perception, what you see and what you interpret. Okay, so I think the doubt will clear what is the visual perception. The next is what? The past experiences. So past experiences means what? Just the previous conversation about any people. Yes. आपने किसी से बात की तो आप एंड फ्यूचर में फिर उससे कोई बात की आपने, तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस आपका बना उससे बात करके वो डेफिनेटली उसको अफेक्ट करेगा आपके फ्यूचर के कम्युनिकेशन को. ओके, सो इट मीन्स द प्रीवियस कन्वर्सेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज जस्ट अ पास्ट एक्सपीरियंस, एंड दिस पास्ट एक्सपीरियंस definitely affect your future communication. Okay, if that but previous conversation is bitter or a good, so it depends on the factors. So past experience. Okay, I think it is clear. The next, some examples. So what are the examples? Your first day of ride a bicycle. Okay, आपने जो भी हम फर्स्ट दिन जो भी चलाते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स विल फॉल. ओके, बहुत से बच्चे गिरते ही हैं, डेफिनेट एक ऑप्शन है गिरते ही. तो हम क्या है, वो गिरने से हम क्या सीखते हैं कि ये करेंगे तो गिरेंगे. क्लियर? सो दिस इज व्हाट द पास्ट एक्सपीरियंस. या आप किसी को कुछ एडवाइस देते हैं, ऐसा मत करो ये हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट जस्ट योर पास्ट एक्सपीरियंस. आपके साथ हुआ है तो आप दूसरों को बचा रहे हैं. ओके, the next is your experience when you clarify your doubt and the teacher scold you. If in any class you can clear your doubt, and if teacher scold you, then for the next meeting you can't clear your doubt. Okay, even you not utter a single word. Same here, the next example, past experiences to amend the constitution. Yes, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्यूज़ बने हुए हैं पहले से, पर जो एक्सपीरियंस जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देख के हम उनको चेंज करते जा रहे हैं. यस, तो जैसे आर्टिकल 370 हमने हटाया. सो व्हाट इज इट्स हैविंग सम प्रोज एंड कॉन्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोज एंड कॉन्स वी कैन चेंज द आर्टिकल 370. सो इट्स जस्ट एन अमेंडमेंट on the behalf on the basis of past experience. So the last line is what? Our is the solution. Our communication get affected by our past experience to a great extent. जो हमारा communication है वो definitely affect करता है in a great extent with the past experiences. Okay, so the next is what? The prejudice. Prejudice means just a prejudgment. Yes, आपने उसके बारे में कुछ सोच रखा है, कुछ बिलीफ बना के रखा है. यू नो, ही इज द मैन who is having extremely powerful. So this is a prejudice. आप किसी के बारे में एक बिलीफ बना रहे हैं. Clear? Some stereotypes. So it means a prejudgment. It just totally depends on the stereotype. Stereotype means पुराने ख्याल. Okay, on the belief about a specific group of people. Prejudice takes place when we start relating the person to someone in the past. Okay, जब हम किसी को कनेक्ट करने लगे, रिलेट कर रहे हैं किसी प्रीवियस से या पास्ट एक्सपीरियंस से, तो दिस इज व्हाट द प्रेजुडाइस. वो हमारा एक सोच हो जाती है, बिलीफ बन जाता है. क्लियर? सो इन प्रेजुडाइस देयर आर सम एग्जांपल्स ऑल्सो. वन बिलीफ इज दैट मैन इज बेस्ट ड्राइवर ऑफ द व्हीकल्स देन द वुमन. इट्स जस्ट अ बिलीफ और अ ट्रुथ. Is just a debate condition. It is a belief or it is a truth. So it's just a prejudice. Okay, so next, boss having more knowledge than its subordinate, men are more stronger than women, etc. These are lots of communication things on the behalf of man and woman. Okay, so next, we must consider it is a solution. We must consider everybody as unique. Okay, हमें सबको यूनिक समझना पड़ेगा and keep them away from these prejudice. और हमें उनको इन prejudice से दूर रखना होगा, तभी हम इसको
सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं. द नेक्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल. Why I'm saying the subscribe to subscribe the channel? If you subscribe the channel, then you got the every notification of my video. Okay, if I'm uploading the question number, chapter number, or question and answers video, so you can get the notification. So just subscribe the channel, push that button. Okay, so thank you. Stay home, stay safe.